हाँ जी, ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडिबल। ठीक, चलो रजिस्ट्रेशन खत्म भी करना है हमने। डाउट था? हाँ जी सर, कौन सा? 23A। ठीक है सर। लास्ट में डिक्टेशन क्या थी पहले ये बताओ। लास्ट लेक्चर which was on Thursday. ठीक है, 25 पे लास्ट में ये लिखा था that on the score to the presentation of application under 25, यही था last line. The provision of section 30 would come into play and there is no illegality. नहीं? Yes or no? ठीक, 23 के ऊपर एक दो लाइंस और लिखो, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद तेरे को 23A समझना है दोबारा से, वो समझाओ। चलो, ट्रांसफरी सेक्शन 23 पे लिखो, ट्रांसफरी of immovable property, transferee of immovable property is under an obligation, to get the title deeds registered, under his name within 4 months from the date of transfer, within 4 months from the date of transfer, which means there is a limitation period imposed by the Registration Act on the transferee to get registration done in his favor. आपकी रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी शुड बी पेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डीड एंड the registration must be done within the 4 months from the date of its execution. Suppose आज आपकी टाइटल डीड्स जो हैं इसके थ्रू ए और बी ने सेल की बात हुई और यहाँ पे सेल डीड जो है वो बनाई से ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को बनाई। From this date, within how many months the registration must be done or should be applied for? 4 months. That would be April. With regard to the stamp duty that must be paid within 3 months. That is होगा 3 months। यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं आएगा, लास्ट ऑफ अप्रैल आएगा।
ये 3 months, ठीक है। विद इन दैट 3 months आपकी स्टाम्प ड्यूटी पे होगी एंड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आपकी रजिस्ट्रेशन फीस पे होगी। क्लियर है? द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड। क्लियर है? सेल डीड को रजिस्टर कराते हैं साथ के साथ टाइटल डीड, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, जो डॉक्यूमेंट्स उनको तो इकट्ठा करते हैं और फिर 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। तब वो सेल डीड रजिस्टर होती है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते कब हैं? पहले बनते। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और ऑफ सेल में अग्रीमेंट टू सेल पहले बनता है। अग्रीमेंट टू सेल बनने के बाद फिर वो सेल डीड बनेगी। सेल डीड जो है वो विद इन 4 months रजिस्टर होगी। नहीं बच्चे, प्रैक्टिकली साथ की साथ ही होता है। वो टाइम पीरियड बता रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 4 months। अगर कंडाउन कराना है तो मोर देन 4। आप सपोज करो दिस ए मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वेंट इन कोमा and he gained his consciousness say in December 2024, right? And the time period was 30th April 2024. अब ऐसे केसेस में will he get the condonation? Sufficient cause being shown। अगर वो नहीं करना तो प्रैक्टिकली जैसे उसने बताया था क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, दोबारा से नहीं बना देंगे। नहीं बनाएंगे तो विद इन 4 months आ जाएगा, अदरवाइज आप कॉन्डोनेशन ले सकते हैं, मीन्स एक्सटेंशन। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोजिंग द कोर्ट द फीस दैट इज 10 times और मे बी लेस देन 10 times, और हो सकता है कोई भी फीस इम्पोज ना करें और वो साथ के साथ इसके अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कर दें। इज दिस क्लियर? ठीक है। 23A है ना। आपको टास्क भी दिया था मैंने शायद कुछ, है ना। री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अगर 32 के हिसाब से यू आर नॉट द रिकग्नाइज्ड पर्सन जो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और तूने अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रार ने रजिस्टर कर दिया, बाद में जाके पता चला कि ही वाज नॉट द कंसर्न पर्सन, सो नाउ यू वांट टू री रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां नहीं है, अथॉरिटी में भी उस तरीके की कमी नहीं थी कि जो बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट हो, अदरवाइज तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा अफ्रेश। बट अगर पर्सन को हम प्रूव कर दें कि जी इस पर्सन की जगह ये पर्सन कंसर्न है जिसने रजिस्ट्रेशन करनी थी, तो वो री रजिस्टर हो सकता है फ्रॉम द बैक डेट। जिस दिन रजिस्ट्री तेरी वाली हुई थी उसी दिन से माना जाएगा कि अगर मैंने री रजिस्ट्रेशन कराई है फ्रॉम टुडे, इट विल रिलेट बैक टू दी ओरिजिनल डेट। जहां तो कंफ्यूज हो रहा है वो ये है कि मैम जब वो पर्सन ही नहीं होगा जिसने रजिस्टर के लिए अलाउ किया होगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन हुई कैसे, ये कहना चाह रहा है। मैंने नेम कैंसिल करने की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ ये बोला ही इज नॉट ऑथोराइज्ड। He may be in any sense not authorized, doesn't mean that we have to cancel it। कैंसिलेशन नहीं होती, कैंसिलेशन होगी तो सब कुछ अफ्रेश हो गया। अगर मैं इसको रीफ्रेज कर दूं, मैंने उस अथॉरिटी को कैंसिल नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दैट अथॉरिटी और इन प्लेस ऑफ दैट अथॉरिटी मैंने कोई और स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी जो है वो डाल दी, बस। सो इज डज इट ऑलवेज अमाउंट कैंसिलेशन ऑफ द अर्लियर अथॉरिटी? नो, रेवोकेशन कह सकता है, कैंसिलेशन नहीं होती बच्चे। टर्म्स डिफरेंट होती हैं लॉ में। प्रैक्टिकली इसको मत घुसाना। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज मैंने दिया डॉक्यूमेंट के लिए रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जब रजिस्टर हो गया तो उसमें तब ये नहीं पता चल पाया दैट आई वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इवन दो देयर वाज अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं ये सोच रही थी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, लेकिन मेरे पास एक स्पेसिफाइड पावर ऑफ अटॉर्नी थी जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग थी। मैंने दूसरी प्रॉपर्टी भी साथ में रजिस्टर करा दी। बाद में जाके तू आया कि नहीं जी सिर्फ ये रजिस्ट्री की पावर मैम के पास थी, दूसरी की नहीं थी, दूसरी को री रजिस्टर कराया जाए। तो वो री रजिस्टर जब होगा वो उसी दिन से होगा जिस दिन मैंने कराई होगी, बस फर्क इतना है कि मेरी जगह वहां पे नाम तेरा हो जाएगा। अब आया और इजिली समझ में? ठीक है। नाउ
कौन कौन से क्वेश्चंस सेक्शंस पढ़ने को दिए थे मैंने आपको? ओके, पार्ट 9 दिया था, पढ़ लिया पार्ट 9? नहीं पढ़ा। पार्ट 8 भी दिया था मैंने, एंड पार्ट 2 दिया था, राइट? तीन ही पार्ट्स दिए थे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस और नो? उधर क्या देख रही है, मुझे बता, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्लास ये भी शुरू किए, बहुत बढ़िया। पहले पार्ट 5 पे आओ, फिर बताती हूँ तुम लोगों को मैं जरा। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका, हमने जब जनरल रूल पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी और वो लोग रजिस्टर करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को, राइट? अब यहाँ पे कहते हैं प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड, लैंड्स के रिगार्डिंग, राइट? तो अब इसको 28 सेक्शन को पढ़ो, फिर 29 को, ग्रेजुअली इसको समझाऊंगी। हाँ जी, मनवीर, रीड सेक्शन 28 प्लीज। हाँ जी, is it not similar to section 16 CPC wherein the suit can be filed where the unmovable property is situated? एंड 17 के साथ भी जहाँ पे डिफरेंट jurisdictions है, उन डिफरेंट jurisdictions में से किसी भी एक जगह पे डाल सकते हो। तो ये सेम चीज बोल रहा है कि इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टू बी डन, it can be done at any place where either the whole of the property or either the part of the property is situated. Either that may be 17(1), either it may be 17(2), wherein it affects the documents related to immovable property, or it may be A, B, C and double C of section 18. Clear है? Mere declaration. The only thing important here is कि आपको PT में पूछ सकते हैं where the whole of the property is situated or part of the property, both A and B. The answer should be both A and B. Next 29. Yes, Divyam, read 29. बस यही रुक जाना। पहले वो कहते हैं द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट रेफर टू इन 28, या कोई कॉपी या डिग्री ऑफ द ऑर्डर दैट मे बी प्रेजेंटेड आइदर इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, या किसी और सब रजिस्ट्रार में जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज कर रखा है कि वहां पे भी वो रजिस्टर किया जा सकता है। 28 is a declaratory provision, 29 being a specific provision which does not cover all the cases which are covered under section 28. So इसमें लिखा है every document which is not a document mentioned under 28. So that may be those documents which does not require compulsory registration. But still, if you want to get it registered, you can get it registered in the sub-district where the sub-registrar is there, or maybe in any other district where you desire and the state government provided for the same. Clear है ये? Next. हाँ जी,
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई भी कॉपी है डिक्री की या ऑर्डर है जिसको प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट द ओरिजिनल डिक्री और ऑर्डर वाज मेड, or where the decree or order does not affect the immovable property in any office of the sub registrar where the state government desires. आपको बोला था the copy or the order of the decree does not require registration itself, but the rights which are getting affected from that decree or order of the court that requires registration. उसकी ये बात कर रहे हैं. तो अगर आपने कॉपी जहां पे प्रेजेंट की है आप वहां पे जाके रजिस्टर करा लो. अगर ओरिजिनल एक जगह पे है और आपको लगता है कि दूसरी जगह को रजिस्ट्रेशन करानी है और स्टेट गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि इस जगह नहीं तो दूसरी जगह पे आप रजिस्टर करा सकते हो, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल अलाउ करता है सो यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड देयर आल्सो. फॉर इंस्टेंस, the subject matter of the property was situated in Haryana and there has been a compromise deed between the persons that there is another property which is situated say in Punjab can be given to the person concerned under a compromise decree. There was a decree does not require registration, but because it was not the subject matter of the suit, so it requires registration. तो अब हम जाते तो पहले तो हम अगर हरियाणा वाली प्रॉपर्टी होती तो हम उसी के सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार पे जाते, but because there has been a copy wherein we are seeking the registration in the Punjab, then हम पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां उसको रजिस्टर कराएंगे and we'll move an application for the registration in the state of Punjab. क्लियर है ये? अब आ जाओ आगे 30. Yes सुजोत, read 30. So any registrar in his discretion receive or register the document and he may also which might be registered by any sub registrar. तो कुछ powers हैं registrar की in certain cases that even if the document has been registered by the sub registrar, still the registrar has the power to re-register. Re-register means originally can check the documents and register it again. Next 31. Anji, Mani, read 31. इन दैट केस सपोज करो एक विल बनानी है एक पर्सन को, उसके थोड़े से ना रूल समझ लेना. विल जब भी बनाई जाती है तो ये जरूरी नहीं है दैट द पर्सन मस्ट बी अंडर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, नॉट नेसेसरी. ठीक है, विल डज नॉट रिक्वायर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. लेकिन जब भी विल बनती है तो हम सेक्शन 68 से 71 तक एटलीस्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना है प्लस हम इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट को देखते हैं जरूर. अगर एक विल बनाई है तो विल की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया जा सकता है बहुत इजीली. तो हमेशा बेटर ये होता है कि जो दो अटेस्टिंग विटनेसेस है ना वो रिलेटेड विटनेसेस ना हो जिन्होंने अटेस्ट किया. एक डॉक्टर हो तो ज्यादा अच्छा होता है जो ये कह सके कि व्हेन अ विल वाज बीइंग एक्चुअली मेड ही और शी वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट शी वाज और ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर चिल्ड्रन और इसके कारण बनाई है, ये वो डरे हुए थे उससे इसके कारण विल बनाई है, या कोई बिकॉज ऑफ द मेडिसिन वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज थे तब बनाई है. एक तो हमेशा बेटर होती है एज एन एडवोकेट एज अ जज आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास प्रोबेट कोर्ट की पावर्स आती हैं तो आप ये देखो कि क्या डॉक्टर है उसमें कोई अटेस्टिंग विटनेस. अगर है तो गुड बिकॉज उसका सर्टिफिकेट भी आएगा. एक इंडिपेंडेंट अटेस्टिंग विटनेस हो सकते हैं दैट में बी योर फ्रेंड, दैट में बी एनीवन एल्स जो एटलीस्ट ये बता सकें कि हाँ जी विल जो है विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस बनाई गई थी. बिकॉज जब प्रोबेट कोर्ट में जाओगे तो नोटिस इशू होते हैं, ऑब्जेक्शन उठती ही उठती है उसमें and it becomes difficult to prove अगर वो prima facie different लग रही है. अब suppose वो person कहता है कि जी मुझे तो इस will को register भी कराना है, ठीक है, and he cannot move, he is paralyzed person, he cannot go to any place or something like that. तो will बनवाने के लिए जो scribes हैं वो घर पे भी आ सकते हैं.
और अगर कोई और भी रजिस्ट्रेशन करानी है कि रजिस्टर कराना है जी, मुझे बिल कोई रजिस्टर कराना है और वो मान नहीं रहा है, क्योंकि बिल अगर रजिस्टर होगी तो बच्चे एक स्टेप और स्ट्रांग हो जाएगी, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टेप जो है अहेड हो जाएगा, डिग्री स्ट्रांग होगी। तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे जाके भी कर सकता है, even if he is moving in an ambulance and he is being shifted to a hospital. So even in an ambulance, a will can be registered. Certain documents can be registered even at a place where the office of the registrar or the sub-registrar is not situated, even at the private residence or even at a place where the person is residing presently. That may be a hospital, that may be some other places. This is section 31. इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस फ्रेम होके बन सकते हैं आपसे। समझ में आ गया सबको? क्लियर है इधर? अब इसके ऊपर लिखो, फिर आगे डिस्कस करें। ठीक है जी, लिखो। सेक्शन लिखना नहीं है, तुमने नहीं लिखना, लिखा हुआ। सेक्शन 28 generally states, section 28 generally states that registration to be done, that registration to be done in a district, in a district where the property is situated, where the property is situated. However, if registration is done, if registration is done at place, at place where no part of an immovable property, where no part of an immovable property is situated, is situated, it will not itself, it will not itself make the document void, make the document void. Rather, it is voidable, it is voidable and can be set aside, and can be set aside as per the provisions of Limitation Act, as per the provisions of Limitation Act 1963. सेक्शन 30 पे लिखो, 30. Registrar has plenary power. Plenary means complete power to receive PLENARY, plenary powers, to receive and register a document, to receive and register a document, even though such document was refused for registration, such document was refused for registration by the sub-registrar, by sub-registrar, and no appeal lies, and no appeal lies to the registrar, to the registrar under section 73 of the Registration Act, under section 73 of the Registration Act. सेक्शन 31 पे लिखो, registration under extraordinary circumstances, registration under extraordinary circumstances can be done at private residence, can be done
at private residence or it can be done either in an ambulance or in a car or courthouse or in train or at a railway station or in a journey or at a railway station or in a journey, and and such registration will be valid. Such registration will be valid. ट्वेंटी थ्री ए पे तो मैंने कुछ नहीं लिखवाया ना अभी. एक एग्जाम्पल लिखो ना. 28 भी है. एक एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद फिर एक मॉडल आंसर करेंगे. 23 ए लिखेंगे उसके बाद. There has been a sale deed between A and B in which the property is situated in two districts. In which the property is situated in two districts. That is X and Y. X and Y. Districts are X and Y. In X district, a small portion of the property was situated. A small portion of the property was situated. And the registration was also done. And the registration was also done at the same district. At the same district. Decide whether the registration is valid. Tell me. Valid है. अगर आपको इसको 2.5 मार्क्स में लिखना है, how would you write? वेरी गुड. अब इसको लिख के दिखाओ मुझे. आंसर के रूप में 2.5 मार्क्स में लिख के दिखाओ. अभी इसमें सेक्शन 28 आएगा. आप स्टार्ट कर सकते हो. दैट एज फार एज द preposition is concerned, section 28 is the appropriate provision to be dealt with, and it states as following में पूरा section 28 मत लिख देना. The ingredients, and then say because the property is situated in both the districts, even though the small portion was situated at district X, it does not matter that even the small portion property thereby section 28 does not restrict that even if small portion is situated at some district, you cannot register at that district, and therefore the registration is valid. लिखो जरा. Giving you 5 minutes time. डबल टाइम दे रही हूँ, जबकि मुझे सिर्फ 1 मिनट टाइम देना चाहिए.
Do right. I will check each and everyone's answer. हो गया मैम? दिखाओ. और बेटर हो सकता है. हाँ जी, जिस जिसका हो गया लेके आओ मेरे पास. The first attempt, it's a good answer. शायद थोड़ा और मतलब the gist is missing. थोड़ा सा मतलब somewhere एक percentage which I'm expecting वो missing है तेरे अंदर. बहुत बेसिक लैंग्वेज लिखी है. Improve upon the law language. ये तूने इतना बड़ा लिखा है? Good. हाँ जी. Okay. Improvement. बहुत कंसाइज लिखा, बहुत कंसाइज. हाँ जी, मनवीर आप लेके आओ. आने नहीं दे रहा तेरे को है कि बैठ जा. 2 मिनट. थोड़ा सा बच्चे बड़ा लिखना शुरू करो. क्या लिखा? अच्छा, ठीक है. पहली अटेम्प्ट है. हाँ जी. लेंथ ठीक है. 2.5 के हिसाब से लेंथ ठीक है. टाइम देखना पड़ेगा मैनेज करने के लिए. हाँ जी, किसने चेक नहीं कराया अभी तक प्लीज जल्दी आओ चेक कराने के लिए. लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तेरे को अभी भी. अभी भी करेंगे. अभी बताऊंगी कैसे. मनवीर ठीक है, बताऊंगी. हाँ.
गुड. एक दो लाइन मिसिंग थी बस. अंजी, आदित्य पीछे, शिवानी एंड द अदर. गुड. अंजी, आप दोनों, आपने लिखा है पीछे. वाई? ऐसे यस नहीं लिखते बच्चे, हेंस करते हैं. यहाँ पे भी यस पहले नहीं लिखना, पहले शुरू करो कि है क्या ये. आप लोगों को अभी भी समझाया था कि irrespective of the fact whether it contains a small portion or the large portion, section 28 does not talk about the same. Section 28 only states or declares that wherever the property or even the portion of the property is situated, you can go in for the registration. आपने वो एक दो वर्ड्स मिस किए हैं जहां पे आपने लिखना था दैट irrespective of the fact that district X had the small portion of the property, still registration will be valid as far as 28 is concerned. आप वो लिखना भूल गए जो मेन पर्पस था. पढ़ना एक बार अपना आंसर, नाम फिर भूल गई मैं तुम्हारा, वरना आंसर पढ़ो अपना. समझ में आया कहाँ गलतियां करी हैं. मैंने स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, that the property has got registered at a district where it only contains the small portion of the property. So the main focus of the question was small portion of the property. आपको वो एक्सप्लेन करना था. Mayank, read your answer also. Regardless of whole or some portion of the property. That was the apt word. समझ में आया. मुस्कान ने लिखा अच्छा है बट इसने पॉइंट्स लिखे हैं. पॉइंट्स की जगह अगर मुस्कान वो तेरा फ्लो चार्ट होता, इट वुड हैव बीन बेटर. और ये जो रिगार्डलेस, इररिस्पेक्टिव, ये चीजें हैं जो तुम लोगों ने मिस की हैं. तुम लोगों को 2.5 में से मैं 1 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगी, और अगर मैं नहीं दूंगी तो वहां के एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट है. वो माइनस तो नहीं दे सकते बट 0 दे देंगे. आप देखो ऐसे पेपर में अगर आप 2.5 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी आपको. Improve the answer writing pattern. Understand the need of the question. What is actually being asked by an examiner. You are not supposed to write everything. समझ में आ रहा है. Yes, no नहीं लिखना, hence करना है. पहले आपको प्रोविजन को स्टेट करना है. ठीक है. दूसरी चीज, थोड़ा लेंथ बढ़ाइए, सबकी लेंथ छोटी है आंसर की. ठीक है. और एक्ट का ए छोटा लिखा है बहुत बच्चों ने, मैंने टोका नहीं है उनको. रजिस्ट्रेशन एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा. कोई भी एक्ट फॉर दैट मैटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, क्योंकि एक्ट और सिंपल एक्ट में फिर डिफरेंस नहीं रह जाता और एग्जामिनर उस चीज को बहुत गलत मानते हैं. आप लोग सब रीराइट करेंगे इसको 2.5 मार्क्स के हिसाब से इन अ डिफरेंट रजिस्टर and show it to me again. You have to write the essentials of section 28, then explain that with regard to this preposition, even if small portion has been situated, 28 does not restrict that, and thereby the registration is a valid registration. Clear है सबको? पता चला कहाँ कहाँ कमियां हैं? ठीक है, वो लिखनी है. और जिनकी हैंड राइटिंग पे सिर्फ बढ़ाने को बोला है तो वो करें. बाकी कुछ जगहों पे हैंड राइटिंग ओवरडूइंग्स अवॉइड करो. ओवरडूइंग्स मींस कटिंग नहीं करनी है, आप लोगों ने कर रखी है तूने. ठीक है. और थोड़ा सा खुला लिख मनवीर.
ठीक है जी, आगे आ जाओ। 23A पे लिखो। है टाइम कि नहीं है टाइम? है ना अभी? बस ठीक। हाँ, 23A के बाद बच्चे मॉडल आंसर ही है। लिखो। Section 23 capital A provides that re-registration of the title deeds by the owner in his name in case of misdescription of his name or some error made by the registrar in the title deeds and also provides the remedy for such an error that is the time limit has been provided for removing errors that has caused material alterations in the language of the title deeds and the moment person gets aware of it has to apply to the concerned sub-registrar within 4 months from the date of discovery of the fact and such a rectification will be done or will have a retrospective effect. For instance, in the year 2000, आप लोग चेक कर लेना इलास्ट्रेशन लिखवा रखी है कि नहीं, लिखवा ना भी रखी हो तो ड्रॉ करा रखी है कि नहीं, ये चेक कर लेना। In the year 2000, a seller sold his property to be the buyer within 4 months
B will go to the sub-registrar to get the registration done. In B's favor. टाइटल डीड, सेल डीड सब लेके जाएगा ना वो, ठीक. However, in 2021, B wants to sell his property. In 2021, B wants to sell his property to C. When the documents were being given to C, the name of B was wrongly written. Which was recognized after 21 years, due to which C will be afraid of purchasing the said property. Now B is under a duty to go to sub-registrar within 4 months from the date of knowing the misdescription ठीक है जी. अब एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर वो लिखा हुआ होगा आप लोगों को. Mr. A has purchased नहीं लिखा हुआ an immovable property. Mr. A has purchased an immovable property from Mr. B on 1st January 2020. Mr. A fails to get the registration. Of transfer done in his favor up to 30th April 2020. Decide. Request answer. As per the factual metrics of the case, or as per the above stated preposition, the following issues are to be framed
The following issues are to be framed. Number 1, whether A is barred for filing. Whether A is barred for filing the document for registration. Whether A is barred for filing the document for registration. Second, whether A can get the property registered. Whether A can get the property registered after the expiry of the prescribed period. After the expiry of the prescribed period of 4 months. Of 4 months. Dekho. Next para. As to issue number 1. As to issue number 1. In this case, A was under a duty. In this case, A was under a duty to get the registration. To get the registration of immovable property done. To get the registration of immovable property done within a period of 4 months. Within a period of 4 months from the date of transfer. From the date of transfer, that is 1st January, that is 1st January 2020 till 30th April 2020. Till 30th April 2020. As provided by Section 23 of the Registration Act. Section 23 of the Registration Act 1909, 1908, hereinafter referred to as the Act. Hereinafter referred to as the Act. Again, or full stop. By looking into the above stated section as the Act, full stop. Referred to as the Act, full stop. By looking into the above stated section, the registration cannot be done beyond 4 months. The registration cannot be done beyond 4 months. However, A has the remedy. A has the remedy under Section 25 of the Act. Under Section 25 of the Act, wherein if he is able to prove, sufficient cause, inverted commas में रखना इसको, sufficient cause for not registering the document, before the registrar or
or the sub-registrar as the case may be, comma, can get further extension of 4 months. Next para. The registrar or sub-registrar while extending has the prerogative to impose an amount not exceeding 10 times of the registration fees, not exceeding 10 times of the registration fees. So the issue number 1 that has been interpreted in light of the above stated provisions clearly indicate that the document is not barred. Next para. As to issue number 2, Section 25 of the Act clearly states that registration of a document can be done even after the expiry of first 4 months and an extension of further 4 months can be granted as per the procedure laid down in Section 25, which has already been discussed. Hence, next line hogi hai hence wali. Hence, the remedy available to A is to go under Section 25 of the Act और इसी का दूसरा improvised answer
एक तो ये आंसर होगा, एक और हेंस A is advised to file an extension application. A is advised to file an extension application to avail the benefit of section 25 of the act from the registrar or sub-registrar Stop. ठीक है जी, इसको अच्छे से पढ़ के आना और दोबारा से यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज इन दिस एज वेल. ठीक है, दैट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर. You can always get into the improvisation and add certain more provisions to it. Now we have done part 3, part 4, part 5, right? part 6 करना है और उसके बाद मैंने आपको 8 और 9 बोला था. 8 और 9 कर रखा है आपने? पढ़ रखा है? कोई भी दिक्कत इसके अंदर प्लीज? पार्ट 8 एंड 9 अगर नहीं कर रखा तो व्हाट आई विल डू इज कल हम पार्ट 4 से लेके पार्ट 9 तक पहले बेयर रीडिंग करेंगे और उसको जो भी रिक्वायर्ड होगा, जहां जहां भी मुझे समझाने की जरूरत है, समझा के उसको खत्म करूंगी. दैट वुड बी वेंसडे एंड थर्सडे आई विल स्टार्ट विद पार्ट 10. पार्ट 10 में वी हैव ऑलरेडी डन 49 है ना. 47, 48 एंड 50 बचा हमारा सिर्फ, कि वो भी कर लिया है? नहीं किया है ना. ठीक है, थर्सडे वील डू दिस पार्ट 10 एंड 11 एंड आफ्टर दैट नथिंग इज मोर लेफ्ट. फिर ये हो जाएगा. कौन सा लेक्चर है आज आपका रजिस्ट्रेशन का? कैलकुलेट करो जरा. हाँ, 5th होगा, 4th 5th होगा आराम से. आज 6th है आज. ठीक है, so 5 more lectures, maybe before that we'll wind up. ठीक है, at the max 11 lectures लगते हैं. तो इन केस अगर जैसे कल नहीं हुआ, अगर कल हुआ हो गया होता तो आज हम आगे होते. सो डिपेंड्स, अगर कोई ऐसा बीच में मिस होगा तो प्लीज ये पढ़ के रखिएगा, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिफ्यूजल वाला है, जो हमने 71 से करना है. वो भी रेमेडीज कैसे हैं उसका एक चार्ट बनाऊंगी, बस वो रेमेडीज रटनी है आपने, बाकी लिखने वाला बचेगा आपका जो भी. सो विल स्टॉप हियर टुडे. एनी डाउट्स? आ जाओ. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी आपका चेक करके मैं आपको शाम को रिवर्ट करती हूँ.